जी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की न्यू बुक है, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की जो न्यू सिलेबस आया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नाइन्थ का और फर्स्ट ईयर का कोर्स इन्होंने चेंज किया है, तो फर्स्ट ईयर को आज हम जस्ट इसका कि कितने चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में क्या क्या चीज़ ऐड की गई है। जी सबसे पहले तो ये पंजाब टेक्स्ट बुक है और इसमें चैप्टर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर का नाम है मेजरमेंट, दूसरे का है फोर्स एंड मोशन, थर्ड का है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशंस, फोर्थ का वर्क एनर्जी एंड पावर, फिफ्थ सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स, सिक्स का हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, सेवन्थ का वेव्स एंड वाइब्रेशंस, एट का फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स, नाइन्थ है इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, टेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म्स। फर्स्ट जो 11वां चैप्टर है उसका नाम है स्पेशल थ्योरी एंड रिलेटिविटी, एंड जो 12th चैप्टर है उसका नाम है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स। चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में सबसे पहले फ़िज़िक्स की डेफिनेशन है। चैप्टर इंशाल्लाह लेक्चर वाइज भी मैं ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊँगी। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आ रही हैं और देयर यूनिट्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, बेस यूनिट्स हैं, ड्राइव यूनिट्स हैं, साइंटिफिक नोटेशन है। ये पहले भी था इस ऐसे चैप्टर में ना, पहले भी था, लेकिन हम सिर्फ एक्सरसाइज ही करते थे ऐसे चैप्टर्स की। प्रीफिक्सेस हो गया, अनसर्टनली इन मेजरमेंट्स, यूनिट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, वर्किंग विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रिसिजन एक्यूरेसी, ये तमाम की तमाम चीज़ें। मेन चीज़ जो आप लोगों ने करनी है एक्सरसाइज। पेपर जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन आते ही एक्सरसाइज से हैं सारे के सारे, और न्यूमेरिकल्स इसके कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन इन्होंने ऐड किए हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फोर्स एंड मोशंस। बेसिक कंसेप्ट है स्केलर एंड वेक्टर्स, ये पहले भी था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स, इक्वेशन ऑफ मोशंस, derivation of second equation of motions, derivations of second equations of motion by graphical method, derivation of third equations of motion by graphical method, motion under gravity, most important है, projectile motions, height of projectile, time of projectile and range of projectile। तो प्रीवियस बुक जैसे ही है सेम। मोमेंटम आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, elastic and inelastic collision, elastic collision in 2 dimension, inelastic collision in 1 dimension, kinetic energy, rock propulsion, बस नज़र नहीं आ रहे। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस आपने याद करने, कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस हैं, कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, क्वेश्चन ऑफ एंगुलर मोशंस, सेंट्रीपिटल फोर्स, नाइन्थ वाला सारा, एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल आ गया, आर्टिफिशियल सेटेलाइट,
orbital velocity, weightlessness in asteroid, artificial gravity, movement of inertia, angular momentum, law of conservation of angular momentum, short questions, constructed questions, comprehensive questions, वर्क एनर्जी एंड पावर। मुझे तो पहले जैसे ही लग रहा है चैप्टर सेम एज इट इज़ ही है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, पावर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, escape velocity, work energy theorem। इसमें कौन इतनी चेंजेस हुई? इंटरकन्वेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5, सॉलिड एंड फ्लूइड डायनेमिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, crystal and solid amorphous solids, deformations in solids, stress strain young modulus, determination of young modulus of a wire, elastic deformation, plastic deformations, elastic limit, plastic deformation, ductile substance, brittle substance, strain energy in deformed material, alternative form of elastic potential energy, Hermitius law, principle and flotations। सारा नाइट में आप लोगों ने ये किया हुआ है। स्टेडी नॉन विस्कर्स एंड आइडल फ्लूइड, क्वेश्चन ऑफ ए कंटिन्यूटी, increase in flow velocity, Bernoulli equation, uses of Bernoulli equation, Torricelli theorem, Whisker-Stroke and Stroke law, terminal velocity, real fluid, superfluid, मुझे तो पहले जैसी, मुझे इसमें को नहीं थी चेंजेस हुई, ऑलमोस्ट पहले जैसी बुक है। चैप्टर नंबर 6 है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, assumption of kinetic theory of gases, time of Coulomb, negligible limitation of kinetic molecular theory, question of state for an ideal gas, gases law, Boyle's law, Chau's law, classic law, thermal equilibrium, internal energy, work and heat, first law of thermodynamics, isothermal process, adiabatic process, reversible, irreversible, heat energy, second law of thermodynamics, Carnot engines and Carnot theorems, refrigerator, entropy, टॉपिक इजी हैं, waves and vibration, types of waves, principle of superpoint of waves, interference and its type, stationary waves and their formations,
Second mode of vibrations, n mode of vibration. Experiment demonstrating stationary wave using microwaves, diffraction of waves, ripple tank, beat, beat frequency, turning musical instrument, intensity of a wave. Topics easy हैं. Tropler effect. Application of Tropler effect. Physical optics and gravitational waves. Polarization of light. Types of polarization. Production and detections of a plane. Polarized light. Polarized light by the method of reflection. Malus law. Optical activity. Two main application of polarization. Gravitational waves. Four types of GWS यानी कि ग्रेविटेशनल वेव्स की. स्पेस टाइम इंटरफॉर्मेंटर. ये सारा कुछ इजी टॉपिक्स हैं. चैप्टर भी छोटे छोटे हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी. कॉलम्स लॉ. ये तो 12वीं में था कॉलम लॉ, जिन्होंने यहाँ दे दिया, और एज इट इज़ था. पहला चैप्टर था 12वीं का. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फ्लक्स. गॉसेस लॉ. ये सेम एज इट इज़ 12वीं का टॉपिक था, जिन्होंने यहाँ चैप्टर ऐड किया है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट. इलेक्ट्रिक वोल्ट. Path of charged particles. Shielding from external electric field. Electric current. Electric current through the conductor. Ohm's law. Resistance. ये सारा 12वीं के हाफ चैप्टर ऐड किए गए हैं. इलेक्ट्रिकल पावर. Kirchhoff's rule. Wheatstone bridge. पोटेंशियोमीटर. कोई फ़र्क नहीं, एज इट इज़ टॉपिक उठा कर दिए हुए इन्होंने. यूज़ ऑफ गैल्वेनोमीटर. थर्मिस्टर. लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर. एप्लीकेशंस. Electromagnetism. Force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field. Magnetic flux and flux density. Magnetic flux linkage. Motion of a charged particle in a magnetic field. Velocity selector. Induced EMF and Federal law. Lenz's law and direction of induced EMF. Factor affecting EMF. Seismometer. Chapter number 11 is special theory of relativity. Relative motion. Frames of reference. Special theory of relativity. Relativity of similar length, contractions, mass variations, equivalence between mass and energy, space-time in relativity.
नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, मैटर एंड एंटी मैटर, पेयर प्रोडक्शंस, रेडियोएक्टिविटी, अल्फा डिके, gamma radiations, fundamental particles, hadrons and leptons, quarks, beta decay in terms of quarks, Higgs boson, conservation's law, theories about the force between the masses of particles, string theory, बहुत ही इजी कोई नहीं है तो आप लोग फिजिक्स रख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई जी ICS लोग ज़्यादा रखते हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को इजी लगेगी। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें क्योंकि इसकी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।